previous lecture, I think we did some basic numericals about PCM. Am I audible? Yes, sir. So we did some numericals in relation to PCM, and we'll just continue with one more numerical, and thereon we'll move to the next topic. आवाज नहीं आ रही सर. Uh, can you hear me now? You should be able to hear me. Let's continue. Hanji beta. So the numerical which we did last time, Sujak, clear sir? Yes or no? Any voices please? वो clear है ना? Yes or no? Tanzeeb, are you there? So last time जो numerical हमने किया था, any voices please? Is anybody present or all are absent? Because based on answers only, I'll qualify you people as present. So you are audible. That's fine, but you're not. You're also answerable. You're not answering. I'm saying जो numerical था पुराना वो clear है. Yes, sir. That's fine. So let's move ahead with one more numerical very quickly. आप लिखिए जरा इसको जल्दी से. A message signal of 10 cos numerical जो आज का है with what we will start. A message signal of 10 cos 2 pi 10 raised power 4t. थोड़ा जल्दी लिखिए प्लीज बिकॉज वी इन्वेस्ट लॉट ऑफ टाइम इन सो मेनी अदर थिंग्स, सो आई होप कि यहाँ पे हम थोड़ा टाइम सेव कर सकें. सो अ मैसेज सिग्नल ऑफ 10 cos 2 pi 10 raised power 4t is transmitted through a PCM system with sampling rate is transmitted through a PCM system with sampling rate twice the Nyquist rate. That sampling rate is equal to twice Nyquist rate. Maximum QE मतलब QE max जो हमने कहा था. What is QE by the way, roll number 29? Quantization error. Exactly right. Maximum QE should be at most of 0.1% of peak amplitude of message signal. I'll repeat. A message signal of 10 cos 2 pi a message signal of 10 cos 2 pi 10 raised power 4t is transmitted through a PCM system with sampling rate twice the Nyquist rate, as you can see. Full stop. Maximum QE should be at the most of 0.1% of peak amplitude of message signal. Full stop. Find all parameters of PCM system. I'll very quickly go with this question because you also can try on your own in the meantime, but I will also very quickly go with it because we have very less time available. So the first thing over here is AM. How much is AM? Can you be with me, number 29, please? 10. AM is exactly equal to 10. Next point, 10 volts rather. How much is FM? 10 raised power 4. So that is 10K. Right? Yes. How much is Nyquist rate? It is twice FM all. Nyquist rate जो होती है ना बेटा, Nyquist rate होती है twice FM always. Sampling rate can be equal to Nyquist rate or higher than Nyquist rate. What do you mean by Nyquist rate? जब Fs is equal to twice FM, that is the Nyquist sampling. याद है ना आपको?
29 Yes, you sir. remember? So by default जब भी Nyquist rate ढूंढनी हो तो twice FM ही आएगा. Okay? By default जब भी Nyquist rate ढूंढनी हो तो twice FM ही आएगा. अब सैम्पलिंग रेट जो है पर्टिकुलर केस की दैट कैन बी आइदर इक्वल टू Nyquist सैम्पलिंग और लेस देन और ग्रेटर देन Nyquist सैम्पलिंग. Nyquist सैम्पलिंग इज द स्टैंडर्ड. Is that clear? Should be. Yes, sir. So then I will find Fs. For this question, Fs is said to be how much? Twice Nyquist rate. Twice Nyquist rate. Absolutely correct. So if this turns out to be 2 into Fm, that is 20. 2 into 10, 20k. Then Nyquist rate has to be 2 into 20. Is that correct? 2 to the 4, 40k. Kilohertz rather. It is better to write hertz. Now is the main concern. Now it is given that QE max should be at max how much? 0.1% So of I can AM. say QE max should be less than or equal to 0.001 of AM, or else I will write it this way. कहाँ लिखा था मैंने? 0.1 Divided by 100. 0.1% of this. Okay, is that okay? So now when I say now QE max I know is equal to how much? Delta by 2 should be less than or equal to 0.1 divided by 100. Exactly correct. And AM कितना है हमारा? 2 मिनट के लिए उसको रहने देते हैं. Because we know our delta is equal to what? AM by 1 by 2 twice. no is never. Delta is equal to twice AM By 2 raised power n. by 2. 2 raised power n, right? Is less or equal to 0.1 divided by 100 into AM. AM cancels out. 2 and 2 will cancel out. What we are left with, you have 2 raised power n साथ साथ लिखते जाइए प्लीज. So at the end you have 2 raised power n is greater than or equal to 1000. जरा देखिए मैंने सही किया कि गलत है. टू रेज पावर n तारी ऊपर 100 तारी ऊपर 0.1 गैसे डिवाइड. ओके, इज इट विजिबल? आई थिंक इट्स परफेक्टली विजिबल. Yes, sir. therefore 2 raised power n, because 2 raised power n कहाँ गया? eyes on board please, eyes on board please. 2 raised power n कहाँ गया? यहाँ 100 यहाँ आया, 0.1 यहाँ आया, 0.1 से वो 1000 बन गया. So 2 raised power n is greater than 1000, and therefore from here I conclude n is approximately equal to how much? ताकि ये वाली टर्म 1000 के बराबर आए, n is equal to how much? 10. तो ये थोड़ा समझ मकसद क्या? उस मकसद ये था कि नंबर ऑफ बिट्स निकालना. बेटा जो भी यहाँ पे हम न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, आई एम नॉट रियली गेटिंग अ फील दैट न्यूमेरिकल्स आपको उसी तरह समझ आ रहे हैं जिस तरह कंसेप्ट, थ्योरी कंसेप्ट फिर भी ऑनलाइन क्लास में मुझे लगता है परफेक्टली हो जा रहा है जैसे ऑफलाइन में होता था. लेकिन न्यूमेरिकल्स में मुझे लगता है एक थोड़ा सा कनेक्ट मिस हो रहा है. सो आई वुड रियली रिकमेंड टू रिवाइज दीज न्यूमेरिकल्स नेसेसरीली इमीडिएटली आफ्टर क्लास. प्लीज डू इट. हाँ, इज दैट ओके? Yes, sir. Please do it. So we are able to find what? N. N मिला तो उसके बाद क्या है कि we will find another parameter, that is your RB. RB किसके बराबर थी? N into F of S. देखिए ये तीन चीजें हैं. Nyquist rate. Nyquist rate से निकलता है FS. FS से निकलता है RB. RB से निकलती है, come on, RB से क्या निकलता है? Time Bandwidth. period. Bandwidth. हाँ वो तो खैर इनवर्स उसके बराबर, दैट्स राइट, यू आर आल्सो राइट.
but bandwidth is actually the next parameter. So anyways, फिलहाल हम RB देख लेते कितना. RB will be equal to 4000 kbps. RB क्या है? Bit rate. So bit rate will always be in bits per second. CR is available as कितना? dB will be just inverse of RB, and that is equal to 2.5 microseconds. Following that, two things: bandwidth maximum. Rule number 29, maximum bandwidth is equal to how much? RB. And that is 400K. And simple bandwidth is equal to 400 divided by 2. 200K. Isn't that simple? Yes, sir. Should be. ठीक है? Okay, fine. With that, we'll move to the next topic. That is noise in PCM system. Our next heading is, you write please, noise in PCM system. Our next heading is noise in PCM system. Okay, now when I talk about noise in analog, are you able to listen to me please? This is now an important brief discussion before we move on to the next level. Now when I talk about noise in AM, वहां पे क्या noise का क्या मुराद था? Yes please someone. Noise का मतलब क्या था? Roll number 19. Roll number 19, are you present? No. Okay. Roll number 21, are you present? I'm writing the roll numbers. Roll number 21. No. Okay. Roll number 34. No. Roll number 36. Yes, sir. Okay. बेटा हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था नॉइज इन एनालॉग कम्युनिकेशन. नॉइज क्या होता था वहां पे? सर अनवांटेड सिग्नल्स होती है. राइट. सो नॉइज वहां पे एक अनवांटेड सिग्नल था, या बल्कि हम कह सकते हैं एम्पलीट्यूड में कुछ चेंज आती थी, वो नॉइज था. लेकिन व्हेन वी, या बल्कि हम जब सिग्नल को किसी चैनल में ट्रांसमिट करते थे, राइट, तो चैनल में उसमें कुछ एडिशनल एम्पलीट्यूड ऐड हो जाता था, तो वो नॉइज कहलाता था. And that was what we were concerned about. But when we talk about noise in PCS system, please remember this point, very important point to move ahead. When we talk about noise in PCM system, यहाँ पे हमारे पास दो factors होते हैं. One is channel noise, जिसको हम already जानते हैं, क्योंकि obviously इस PCM signal को तो किसी channel से चलना है ना. So one is channel noise, and second is quantization noise. याद रखा, पीसीएम सिस्टम के लिए हमारे पास दो, इसकी एडवांटेज तो बहुत है, लेकिन इसकी डिसएडवांटेज भी ऑब्वियसली थोड़ी एक्स्ट्रा ही है, इन अ वे आप कहेंगे. सो एक तो नॉइज है चैनल नॉइज, वो तो आएगी हर किसी सिग्नल में, चाहे एनालॉग हो या डिजिटल हो. एडिशनली यहाँ पे एक नॉइज होती है, उसका नाम है क्वांटाइजेशन नॉइज. नाउ व्हाट इज दिस नॉइज? लेट्स सी दिस. We already know about channel noise. We'll not discuss this much. I'll just briefly describe this. Channel noise is the noise, you can just write very quickly, channel noise is the noise which is added to a signal while it is transmitted from maybe source to destination through a channel, right? This noise will be mostly in the form of addition, or I would say deterioration of the amplitude of the signal. We have already discussed that, so we're not much concerned about this. But now what we'll discuss in extension is quantization noise, क्योंकि ये डिजिटल कम्युनिकेशन है और क्वांटाइजेशन से ही डिजिटल कम्युनिकेशन में हम शिफ्ट कर पा रहे हैं. सो क्वांटाइजेशन नॉइज में क्या है? सो
Let's analyze this. Quantization noise का reason जो है basically that is quantization error. We know that QE max is equal to plus minus delta by 2. ठीक है ना? Now, if I just analyze this and I want to decrease the quantization error, what do I have to do? Okay, number 36, you can switch off the mic. Number 28. Yes, sir. हाँ बेटा, मुझे बताइए, मुझे क्वांटाइजेशन एरर को कम करना है. तो कैसे कम करूं मैं? Seeing this equation. डेल्टा को कम. Excellent, you are absolutely correct. So I can decrease the delta because 2 is 2. 2 को मैं क्या कर सकता हूँ? 2 तो वहीं पे रहेगा ना, ये फॉर्मूला का है. So in order to decrease quantization error, I can decrease delta. So point number 1 लिखिए यहाँ पे. Point number 1. Therefore, quantization error or quantization noise is directly proportional to your, what is delta? Number 29. Delta. Number 28, sorry. Number 20, what is delta? Delta is your step size. 28. Okay, sir. Delta is Yes, your sir. step size. ठीक है? Step size. Rightly so. So प्लीज ध्यान से सुनिएगा, ये आज का डिस्कशन बहुत इंटरेस्टिंग है. उम्मीद है कि हम सब इसको समझ पाएंगे अच्छे से. नाउ लेट मी गो टू डेल्टा. ओके, दिस वाज पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, अब हमने डिसाइड किया कि हम डेल्टा को कम करेंगे, राइट? डेल्टा को कम करने के लिए मुझे देखना है कि उसकी फॉर्मूला क्या है, और उसकी फॉर्मूला है V max minus V min divided by 2 raised power n, right? So divide by L. L is 2 raised power n actually. You are correct. But L ही होता है ना 2 raised power n. L is equal to what? 29. 2 raised by n. Okay, fine. So अब बताइए मुझे, मेरा काम है कि मैं डेल्टा को डिक्रीज करूं. अब डेल्टा को डिक्रीज करने के लिए अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन आई हैव 2 ऑप्शंस. वन इज, मैं इस वाली टर्म को क्या करूंगा? Decrease. राइट. खुरम, आप लाइन पे हैं? जी सर. सो मेरे पास 2 ऑप्शंस है. एक ये कि मैं इस वाली टर्म को क्या करूंगा? डिक्रीज. डिक्रीज. या मैं n को करूंगा इंक्रीज. सही है ना? जी सर. या अगर मैंने n को इंक्रीज किया, मेरी ये वाली टर्म बढ़ेगी, ओवरऑल टर्म कम हो जाएगी, या मैं इसको कम करूंगा तो उससे भी मेरा डेल्टा कम हो रहा है. Now let's analyze what does this mean. आप लिखिए, 2 लाइनें लिखिए इसके बारे में. Therefore to decrease delta, you just write it. Hence to decrease delta we have 2 options according to the equation, right? So we are trying to read through the equation that how can we decrease delta. So according to the equation we have 2 options. One is we decrease the V peak to peak. We decrease VPP because V max minus V min is nothing but VPP. We decrease VPP is one option. But practically ये possible नहीं है, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं? By decreasing V peak to peak, what you mean actually is, अगर आपका सिग्नल कुछ इस तरह से है, आप उसको shrink करेंगे to this only. So you are actually decreasing the signal strength so much so it may become practically insignificant. So therefore V max minus V min means that हमें V peak to peak कम करना है, और V peak to peak कम करने का मतलब ये है कि हम actually signal swing को कम कर रहे हैं. So practically वो possible नहीं हो सकता है. So then we have the second option. What is the second option? Rule number 3. What is the second option? So we increase n. Excellent. Thank you. You can switch off your mic. So therefore second option is we'll increase n. So पहला ऑप्शन हमारे पास था कि हम assume this. Now अगर सपोज मेरे पास 2 सिग्नल्स हैं,
उनका मिन मैक्स वैल्यू है दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू से 4 volts एंड मिनिमम इज -4 volts. ऑप्शन ए था कि मैं इसको कन्वर्ट करूंगा टू 2 to -2, ठीक है जी, जबकि n रखूंगा सेम, n इज इक्वल टू 2 bits per sample एंड यहां पे भी 2 bits per sample. लेट्स टेक एन एग्जांपल, ये मैं एग्जांपल से आपको समझा रहा हूं. तो डेल्टा तो यहां पे था 2 volts बिकॉज -4 और +4 है, तो डेल्टा 2 volts है. यहां पे डेल्टा है इक्वल टू 1 volt ओनली. तो मेरा डेल्टा तो कम हो गया. ये मैं केस 1 आपको समझा रहा हूं. केस 1 क्या है कि नंबर 3, व्हाट इज केस 1, व्हाट इज पॉसिबिलिटी 1 रादर? Sir, decrease V peak to V peak. पीक टू पीक. सो ये V पीक टू पीक है, मैंने इसको डिक्रीज किया, n सेम रखा, तो डेल्टा में चेंज आई. लेकिन इन प्रैक्टिकली ये बेटर मेथड नहीं. नहीं है. अब दूसरा केस देखते हैं हम. दिस इज सेकेंड केस नाउ. हम V पीक टू पीक तो सेम रखेंगे लाइक 4 volt एंड -4 volt, बट वी विल चेंज n. से इस केस में हमारा n अगर 2 था, यहां पे हम n को क्या करेंगे, काम की ज्यादा, नंबर 29 ज्यादा. ओके फाइन, राइट. Okay, roll number 40, you be ready. So therefore I realize in this case my delta is equal to 2 volts, and in this case also my delta turns out to be only 1 volt. क्यों? क्योंकि मैंने n को इंक्रीज कर दिया. डेल्टा का n से रिलेशन है, तो n की वजह से डेल्टा कम हो गया. सो वी आर स्टिल एबल टू अचीव डेल्टा ओनली इक्वल टू 1 volt, which is a good news. But as we do this, number 40, क्या bandwidth, number 40, can you hear me? Okay, लेकिन bandwidth की number 56, roll number 56. Okay. Roll number 57. यस सर. हाँ बेटा, मुझे आप ये बताइए, क्या बैंडविड्थ का n से कोई रिलेशन है? हाँ, उसमें एक इक्वेशन है ना n/ts वाली. बेसिकली बैंडविड्थ का n से एक डायरेक्ट रिलेशन है. अगर आपको याद होगा, हमने कहा था बैंडविड्थ इज इक्वल टू RB by 2, and RB is nothing but n into f of s by 2. So we realize as we now increase n, our bandwidth will also be increased. So हमें तो फायदा एक मिल गया था कि डेल्टा डिक्रीज हो गया था, which is good. So we got our conclusion that in order to decrease the quantization error, we have to decrease delta. In order to decrease delta, we will increase n. But the conclusion is that as we increase n, we will be doing some good job, but we will do it at the cost of increased bandwidth. That's the conclusion. So you can write, the drawback of PCM system is as we try to decrease quantization error, the drawback of a PCM system is that as we try to decrease the quantization error by increasing number of bits per sample, that is n, corresponding transmission bandwidth requirements, comma, corresponding transmission bandwidth requirements, comma, corresponding transmission bandwidth requirements will be increased. Okay, so that is the first part of today's topic, and I think which is very nicely put forward in my opinion in your minds. Is it settled down correctly? कोई confusion तो नहीं इस topic में? I think it's perfectly fine. Should be rather. But you please tell me. Okay, ये clear है? इसको अच्छे से बना लेना बेटा, encircle वगैरह करके. So ये conclusion है,
हमने n इंक्रीज किया, डेल्टा तो चेंज हुआ, क्यों? क्योंकि डेल्टा किस पे डिपेंड है? n पे. लेट्स मूव अहेड वेरी फास्ट. So I think we're getting some rhythm as we are settling down. We're done with our experimentation now. So I think we're moving ahead in a very nice way. So what is our concern now is that, or the next heading is signal to quantization noise power. Yeah, signal to quantization noise power ratio should be should be higher. ये सारा हम काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा जो क्वांटाइजेशन एरर हो वो कम से कम हो, और क्वांटाइजेशन एरर को कम करने का ये मतलब है कि हम चाहते हैं कि सिग्नल स्ट्रेंथ जो है, सिग्नल जो एक्चुअल सिग्नल है उसका जो रेशियो हो विद नॉइज वो बढ़े. राइट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? So let's assume that m of t is equal to am cos of 2 pi fmt. Therefore, our signal power will anyway be given as am square by 2r. If you remember, signal power is given by am square by 2r. Likewise, let's assume, next point, let's assume that nq be the quantization noise, nq be the quantization noise power. Let's assume that nq be the quantization noise power, and it is equal to delta square by 12. Just remember it, just remember it in your brains, which is equal to 1 by 12. I know delta is equal to twice am by 2 raised power n ka whole square. Therefore, I can rewrite nq as am square by 3 into 2 raised power 2n. Is it visible, beta?